जब भी आपको एफपीजीए पे प्रोग्रामिंग करना है या फिर एफपीजीए पे प्रोग्रामिंग डम करना है, सो यू शुड हैव अ डिजाइन सोर्स. So this is our half adder program. Okay. So half adder is having, this is our half adder. So it has the two inputs, A and this is a B, and the outputs are sum and C out. Clear? So we just write the equation for sum is a sign, sum equals to A XOR B and C out equals to A and B. Now we want to check. ये तो हो गया आपका डिजाइन, लेकिन जो आपका FPGA बोर्ड है, so I will just show you this FPGA board if it is visible to you. Okay, so on this FPGA boards you may find, okay, on this FPGA board you may find, on this FPGA board you may find this of your FPGA device. Okay, this one is of your FPGA device. So on this FPGA device it has a 256 IOs or 256 pins you can say. So ये FPGA board में से कौन से पिन को, okay, कौन से पिन को हम अपना इनपुट्स कनेक्ट करने वाले हैं. So whether I am having this board, I will just check it. Yesterday we have gone with this. Yes, we are having helix man. Okay, so this is our FPGA board, and in it this is our FPGA device, that is Artix 7. तो ये Artix 7 में, ये Artix 7 में जो पिन्स है, तो कौन से पिन्स को हमको इनपुट और आउटपुट देना है. So that information is given in constraint file. उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम किस में देते हैं, कंस्ट्रेंट फाइल में. सो दैट्स व्हाई दैट कंस्ट्रेंट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंस्ट्रेंट फाइल में हमने क्या लिखा है, सो व्हाट द कंस्ट्रेंट फाइल इज हैविंग, सो कंस्ट्रेंट फाइल में ये इंफॉर्मेशन है कि जो पिन F4 है FPGA की, ओके, उसको हमने दिया है इनपुट ए. इसका इनपुट ए, जो आपका हाफ एडर है, वो हाफ एडर का इनपुट ए, जो हाफ एडर है इसका जो इनपुट ए है, तो ये एक्चुअल में FPGA डिवाइस के कौन से पिन को रहेगा, F4 यानी स्विच 0. ओके, F4 का मतलब क्या हो गया आपका, फर्स्ट स्विच 0, वट एवर यू कैन से. और जो B है हाफ एडर का, वो किसके साथ में कनेक्टेड है, वो कनेक्ट है आपके G5 के साथ में, दैट इज स्विच 2. ओके, और यू कैन से स्विच ऑफ 1. सो हियर यू मे फाइंड, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ओके, so this is my switch 0, though it is written as switch 1, but actually it is of your switch 0. so इसको कनेक्ट रहेगा A, ओके, यहाँ पे कनेक्ट रहेगा मेरा A और यहाँ पे कनेक्ट रहेगा B. क्लियर. सो सिमिलरली आपको आउटपुट भी कनेक्ट करना है, तो पहले एलईडी को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ सम, और दूसरे एलईडी को कनेक्ट करने वाला हूँ मैं सी आउट. ओके, सो दैट पार्ट वी आर गोइंग टू चेक टुडे. So this is a constraint file, simple one. समझ में आया क्या, what is constraint file? So constraint file gives you the information, or here we are providing the connections about your design pins with FPGA pins, या फिर डिजाइन के जो पोर्ट्स है वो FPGA के कौन से पिन को कनेक्ट है, वो जो इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, that is in constraint file. I hope it is clear. Is that right? Is that clear? समझ में आया क्या कंस्ट्रेंट फाइल में हमको क्या लिखना है. सो हाउ वी कैन राइट, वी स्टार्ट विद सेट प्रॉपर्टी. ओके,
then package your pin F4, and it is IO standard, low voltage CMOS, okay, of 3.3 volt, and gate port. कौन सा पोर्ट कनेक्ट करने वाले हैं? A. Okay. So once it is done, here we have to just click on, or here we have to just go with generate bitstream file. So we are having these options you may find here. This is a programming debugging. तो लास्ट में अगर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट डाउन में, तो यहाँ पे जनरेट बिट स्ट्रीम का एक ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करना, जनरेट बिट स्ट्रीम का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना. सो बिट स्ट्रीम फाइल इज हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड अप टू डेट. ओके, देन ओके, we just rerun. So all this process will be run here. You may find यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पूरी प्रोसेस वापस रन हो गई. ओके, दिस रनिंग बिट स्ट्रीम. Okay, once it is completed, then here is that one pop-up window will open. Okay, so this window is open. So here open hardware manager. यहाँ पे आपको क्या करना है? Open hardware manager. Okay. तो कल जो प्रॉब्लम आ रहा था अपने को, वो कहाँ पे आ रहा था? Let I will show you. It is unconnected. It shows unconnected. Okay, your hardware targets, no hardware target is open. यहाँ पे लिखा है. So इसके बाद में आपको करना पड़ेगा open target. यहाँ पे क्या करना? Open target and then auto connect. Is it? Now auto connect करने के बाद में कल यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम जा रहा था. कौन सा प्रॉब्लम आ रहा था? यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टिल इट हैज रिटन एज अनकनेक्टेड, और ये जो ऑप्शन है देयर आर नो डिबग कोर्स, प्रोग्राम डिवाइस एंड रिफ्रेश डिवाइस, ये ऑप्शन नहीं आ रहा था. इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर केबल ड्राइवर हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट. ओके, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? इसके बाद में आपको क्या करना है? वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन we have to just click on program device. बिटस्ट्रीम फाइल आपकी जनरेट हो गई, आपका आपका बोर्ड भी कनेक्ट हो गया. इसके बाद में आपको करना है प्रोग्राम. ओके, you have to do here that program. So I will just show you how it is done. So click on program device. Okay, here that bitstream file will open. If it is visible to you, so you can show it. Program device is done. Now check it. Okay, I just stop the sharing, and so that you will get that full video. Okay, now check it. This is my switch. Okay, let me check. Okay. So this is my input A, it is my input B. This is my first LED sum and second LED is.
See out. So 0 plus 1. Now it is 0 plus 0, 0. No LED has been glowed. It is 0 plus 1. So 0 plus 1, sum is 1. Is it right? Then 1 plus 0. 1 plus 0. Sum is 1. Yes. And 1 plus 1. What is my? Here see out LED is glowing. Okay. And sum is